nobody has ever made a jet engine in Pakistan in the civil aerospace domain. SpaceX, that guy, he commercialized space. So aviation-induced global warming is just 3 to 4% of carbon dioxide, but 15 to 20% of contrails. My dad was supporting me. So he came up with these inventions, which is like an add-on to a jet engine that converts the exhaust emissions. आपके पास एरोस्पेस के कोई एक्सपर्ट सिविल डोमेन में आपके पास कोई नहीं है, वो इंटरेस्टेड ही नहीं होते, ना उनको पब्लिक डीलिंग आती है, ना उनको कमर्शियल पेस पे ऑपरेट करना आता है. हम इतने शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स पे हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी में कोई सॉल्यूशंस नहीं है. Assalamualaikum, I am Alisha and you are watching our channel and I have got an amazing guest today. Assalamualaikum Dr Sarah. वालेकुम अस्सलाम. How are you doing? I'm good, thank you. Dr Sarah, आपकी जो स्टोरी है वो काफ़ी इंस्पिरेशनल है and I think I got very inspired by after meeting. We are meeting after such a long time. Basically, we were together at EME college long time back, right? जी. And then fast forward 22 years and mashallah you have accomplished quite a lot. Dr. Sarah is something who is doing amazing stuff. She is building a jet engine in Pakistan, something that has not been done commercially elsewhere in the world as well. Pakistan में तो ये बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन बाहर भी इस लेवल की गेम किसी ने नहीं की अभी तक. I would really like if you watch this video and pay attention. She's got some exciting things to share with us. Her journey is amazing and you would, I'm sure, going to love this episode. So I would like to hear that from you. थोड़ा सा अपने बारे में करनी में बताएं. What have you done in the journey of life so far? We graduated together from EME college, and after that I worked in the industry, in the manufacturing industry. I was in mechanical engineering and very focused on aircrafts and cars and engines. So I did my internship at the Honda motorbike and car plant, and then after graduating I joined the industry in a manufacturing concern in Islamabad. उसके बाद फिर मैं लाहौर गई, वहाँ पे भी एक ऑटोमोटिव डिज़ाइन कंसल्टेंसी थी, वहाँ मैंने कुछ साल काम किया. और फिर meanwhile I enrolled myself in a flying school. So there I learned, I got a private pilot license. And then I also worked in Islamabad. So I was always a very hands-on engineer. Even during my undergrad, I used to go to an industry in Islamabad with my father and work on the factory floor, and even during my internship. So शुरू से ही एक रुझान था mechanical engineering में और hands-on technology की तरफ. Then I got a scholarship for UK, for Cranfield University, to do my masters and in aerospace engineering. So aerospace में I did my masters in flight dynamics and flight controls, and I worked on mid-air refueling of drones. Drones आपको पता है आजकल तो it's like a household name now. They are, you know, as good as toys, but जो for larger drones or unmanned, वहाँ पे उसको unmanned aerial vehicle कहते हैं. तो या UAV. तो UAVs में ये था कि you know they are small planes with low endurance. तो उनको हम mid-air refuel करते हैं with a tanker. So that they could have longer flights without landing. So my work was on basically designing an autopilot for that. Meanwhile, because I was at Cranfield University, Cranfield is the hub of aerospace in Europe and all across the world as well. They had their own airport, they had their own aircraft. They would train students on aircraft so that उनको एक फील देते थे एयरक्राफ्ट की कि जो आप पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट होता है. तो जनरली तो स्टूडेंट्स वुड गेट 1 or 2 फ्लाइट्स, बट मैंने इंस्ट्रक्टर को बताया कि मेरे पास ऑलरेडी प्राइवेट पायलट लाइसेंस है. ही सेड व्हाट डू यू वांट टू डू? आई सेड आई वांट टू स्पिन द एयरक्राफ्ट. So then he taught me on spin and other acrobatic maneuvers, so you know, flying the plane upside down and flying in a loop and barrel roll. So that was a very unique experience that I got during my studies in the UK. I came back to Pakistan after my masters, and then I got married, and then I got another scholarship for my PhD. So almost a year into my marriage, then I went back to UK to start my PhD. My husband was based here, he was working in Lahore. I went by myself.
I started my PhD, and then I kept on moving back and forth between Pakistan and UK, and I continued some of my research here. On the way, my daughter was born, and that's when I came back to Pakistan, and I started working on I had finished coursework, so I was working on the research with my dad, because earlier on मैं अपने वालिद साहब के साथ काफ़ी काम करती थी. He was a scientist. तो वहाँ Cranfield में I was given this work on developing eco-friendly jet engines and on contrail suppression. जो आपने देखा है कि जहाज़ के पीछे जो धुआं निकलता है, basically that's called a condensation trail. It's frozen water vapor, so it forms an artificial cloud, and people think it's smoke, but it's not smoke as smoke. It's just because, you know, when you burn fuel, you get water vapor and carbon dioxide. Water vapor freezes in a cold atmosphere and forms an artificial cloud, and that is causing global warming in the atmosphere. So इसके ऊपर जो काम था वो basically World War II के बाद start हुआ था, because you know, enemy planes could be detected because of this line of smoke behind the aircraft. So they started how to avoid it and, you know, things, but then they later realized कि इसका environmental impact है, global warming बहुत ज़्यादा cause करता है, 5 times more than carbon dioxide. So aviation induced global warming is just 3 to 4% of carbon dioxide, but 15 to 20% of contrails. So I was working on this. I worked in Pakistan, and my dad was supporting me because, you know, I was working from home and with a young baby, and away from my university and my institutional support and supervisor. So he came up with these inventions, which is like an add-on to a jet engine that converts the exhaust emissions of the jet engine into liquid water and stores it on board to release a clean exhaust, so that you don't get contrails, you don't get global warming, and then you know, you can also utilize this water. You release it before landing as artificial rainfall. तो अगर आपने कोई फॉरेस्ट ग्रो करना है अफ्रीका में, मिडल ईस्ट में, crops को water करना है, so you have artificial rainfall as well. So I developed, so he got 2 patents on the technology. I developed the engineering model, the performance simulations. I went back to UK to complete my PhD. At that time my daughter was old enough to join preschool. I put her in a preschool there, and I finished my PhD, and then I came back. So during my PhD, I think I also won some student prizes, and that's when the first time I was exposed to these clean tech companies where there is investment and they're doing something for the environment. So that's what was the first time I thought out aloud that I would set up my own company, and then my university highlighted and encouraged that this is very revolutionary. It should go beyond a PhD. You must carry on further research and develop it and commercialize it. So I came back to Pakistan in early 2017. I got incubated in an incubation center in Pakistan, and after that I raised some funding, some seed money, and set up this company in 2018 with my dad. So initially we were wanting to work on our invention, but we wanted a jet engine to test our invention, and we were not able to get hold of one from any of these government organizations or aerospace organizations in Pakistan. So he advised that instead of wasting time, you know, we should just make our own jet engine. Oh, wow. So this was like when we made it, we found out that nobody has ever made a jet engine in Pakistan in the civil aerospace domain. So in fact, ours is like a pioneering company in Pakistan, one of its kind, doing research and development in aerospace engines or jet engines in the civil domain. So there is defense R&D, but that's very classified. And then again, it's the first jet engine being made in the civil space as well. Wow, and it's a very challenging design and a very challenging size that we chose, I would say, out of ignorance. We could have done something simpler, but we didn't know what we were getting into. But alhamdulillah, we made that,
and then we also developed the invention. And these days you've seen the setup, seen our lab, and we are just testing the engine, and you saw videos of firing, and we are also testing the invention. And so we are in this conclusive phase of this part of the journey. And inshallah, once this finishes, then we are planning to raise more investment. It's been a while since we set this up, but alhamdulillah, we've achieved many milestones. One is the making of the jet engine, and then some other capability development and infrastructure development in our own setup. And then also the invention itself and the testing. And I presented this abroad as well. It was very to some OEM. I won't name them, but the engine manufacturer. It was well received. I wasn't expecting such a heartwarming response. And a lot of people there, the engineers said they had listened to my TED talk, and and one of the best compliments that I received from somebody was that before this, the developed countries make solutions for developing countries, and this is the first time we are seeing that a solution for developed countries is being made in a developing country. Excellent. Now we have two major objectives. One is I'm just carrying, my father passed away last year, so that was a setback. He was a very well experienced scientist, and of course I cannot match his experience, but I'm just trying hard. Name? Masood Latif Qureshi. All right. Can you please take us back in time? कि उनका क्या था? What was his expertise and how? Because I see his reflection in you. So I would really like to learn about him, a little bit about him. Okay, so he was basically a scientist and a very, very hands-on scientist, and his core subject was physics. He was an experimental physicist and also electronics. But he was very, one of his attributes, I would say, was he would start with very simple concepts, Right. and from the fundamentals, and develop, everything. So anything that was not available, he would try to make it on his own. Excellent. So he had this approach, and that's how he trained us also to develop a capability. And I learned how to conduct R&D from him, how to step by step. We all, हम जैसे books पढ़ते हैं, हमने आपने भी engineering किया, मैंने भी, we read the theory, we take exams, but actually getting into R&D and developing an approach and making it successful from several trials. So he was into manufacturing, automotive, aerospace, digital electronics, controls. Excellent. He has like around maybe at present, like what he shared with me was around like 10 inventions in this in this field, and what he had already successfully developed over the years would be maybe 20 products in different domains like automotive, aerospace, controls, and we were planning to work on other of his inventions like aeroplane designs and some automotive designs, engine designs. So he was very, very innovative. Excellent. And you've seen his products in the lab. I'm amazed by it. I'm blown away by what you've just shown me in this lab, and amazing work you guys have done, mashallah. So I've just tried to basically, collect all his work and organize it a bit, and inshallah maybe one day I'll write a book on Excellent. how he came up with these, and I'm trying to carry on. It's his lifelong passion. Excellent. I think one of the best things that I learned from him was, of course, his passion and the zeal for life. Even like he worked till his, till the very end, and also that he had faith in Pakistan. Like a lot of people say,
जेट इंजन पाकिस्तान में नहीं बन सकता, ये चीज़ पाकिस्तान में नहीं बन सकती. It taught me that everything can be done there. We have the capability, we have the capacity. Yes, I agree, we don't have the right policies. We don't have that enabling ecosystem, but it's not that it can't be done. Absolutely. So, if you take me back in time, I remember when we were at Nust and in the College of EME, and you came a little bit later, I guess. You migrated from Military College of Signals to College of EME. We got to know that there is one girl, she wants to come into mechanical engineering, और उस time पे mechanical में कोई female students नहीं होती थी, and you were the only one, whereas we had some girls in the computer class, and everybody said that girls should go to computer class. There is a preconceived notion, right? Yeah. So I saw a glimpse of passion and purpose. Now that I reflect back in time, I see an absolute passion to do something, your will to really go into mechanical, because now I can relate to it, I can connect the dots, what you were up to. आप उस ज़माने में इतनी क्लैरिटी कैसे थी? बिकॉज लोगों को तो सारी ज़िंदगी गुजर जाती है तो उनको पर्पस समझ नहीं आता, उनको पैशन समझ नहीं आता, एंड दैट इज़ वाई पीपल आर डूइंग थिंग्स दे वर नॉट रियली एजुकेटेड टू. एजुकेशन से कई दफ़ा लोगों का लिंक टूट जाता है. दे आर डूइंग समथिंग टोटली डिफरेंट इन देयर लाइफ्स. सम पीपल never even discover passion even going through the whole life. How did you stumble upon it early on? Yes, I was very focused. I would say from a very early age. Clarity तो बहुत थी, तभी तो मैं आई थी, because otherwise तो ये होता कि मैं mechanical engineering choose ही ना करती, और अगर opt करती और drop वो मुझे ना देते तो I would have just settled with what they offered me. Yes. लेकिन वो एक फोकस था, उस वक्त भी था. What did you have in mind at आई that थिंक time? शुरू से जो मैं अपने वालिद साहब के साथ काम करती थी, मदर के साथ भी करती थी, बिकॉज माई मदर वॉज, मैंने आपको बताया कि शी डिड हर PhD व्हेन शी हैड अस, लाइक हम 3 बहन भाई थे, और जब मैं पैदा होने वाली थी तब मेरी वालदा ने और मेरे भाई के साथ MPhil किया था, और फिर हम जब तीनों थे तब वो PhD कर रही थी. तो शुरू से मतलब आई यूज़ टू हेल्प हर, एंड वो एक मेच्योरिटी डेवलप हो जाती है बिकॉज शी वाज बिजी एंड अ वर्किंग मदर. तो यू नो आई वुड एज द एल्डेस्ट ऑफ द सिबलिंग्स, वो मेरे अंदर एक था, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. इसी तरह फिर वो एक हमारे घर का जो एक एनवायरनमेंट था, बिकॉज माई मदर इज़ अ प्रोफेसर ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री, माई फादर वॉज अ साइंटिस्ट, फिर हमारी और फैमिली में भी साइंस के फिज़िक्स के लोग हैं, तो वो एक घर का माहौल ऐसा था कि इस तरह की डिस्कशंस होती थी और बातचीत होती थी. और एक अगर वो अपनी, मेरी वालदा अपना ही काम भी डिस्कस करिए तो बच्चे चलते फिरते वो चीज़ सुनते इंस्पायर होते हैं. फिर फर्स्ट टाइम उन्होंने, आई थिंक उस ज़माने में कंप्यूटर्स भी नहीं होते थे, तो हमारे घर एक कंप्यूटर आया था. इट वाज क्वाइट अ नॉवेल्टी एंड शी रैन सिमुलेशंस ऑन इट फॉर हर PhD. तो वो चीज़ हमें शुरू से एक वो एक्सपोजर मिला. वी वर फॉर्चुनेट टू गेट दैट एक्सपोजर, एंड देन आई थिंक विद माई डैड ऑल्सो आई वॉज वेरी इन्वॉल्व्ड. एक इंटरेस्ट था. फिर एक उनका बहुत रोल था कि पेरेंट्स जो थे ना, वो हमेशा एक तो इनकरेज बहुत करते थे, सपोर्ट बहुत करते थे, लेकिन जैसे उन्होंने हमें कभी ऐसे फोर्स नहीं किया कि ये काम करो और ये ना करो, या ये बनो या ये ना बनो. लेकिन ये ज़रूर था कि अगर मैं कोई काम करना चाहूँ या मेरे अगर स्कूल में कोई प्रोजेक्ट है तो वो मेरे वालिद साहब उसमें मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे बना के देंगे. मतलब एक दफ़ा उन्होंने मुझे ट्रैफिक सिग्नल्स का सर्किट बना के दिया, एक दफ़ा मतलब वो डिफरेंट मेरे साथ स्कूल के प्रोजेक्ट्स करते थे. इसी तरह अम्मी से हम पढ़ते भी थे, अब्बू से भी फ़िज़िक्स पढ़ती थी, अम्मी से कभी मैथ्स पढ़ लिया, जो चीज़ें. लेकिन एक तो इनकरेजमेंट देते थे, कॉन्फिडेंस देते थे. और ये भी जो चीज़ थी कि जैसे जब मैंने कहा कि मैंने मैकेनिकल करनी है, तो बाकी लोग तो जो इधर उधर सब वो यही कहते थे कि ये मतलब इट्स नॉट अ गुड डिसीजन, या ये क्या ज़रूरत है. बट बिकॉज आई ऑप्टेड फॉर इट, माई डैड went all the way, and he made his best effort that I get it, that it was my passion. तो पेरेंट्स की तरफ से जो कॉन्फिडेंस आता है ना, आई थिंक वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. और फिर मेरा जो
आपको शायद याद हो, लेकिन मैं इंजन टेस्टिंग लैब में मेरा प्रोजेक्ट था एक इंजन ऑटोमोटिव टोयोटा के इंजन पे। तो उसमें मेरे एक सुपरवाइज़र थे, हमारे एक प्रोफेसर होते थे, प्रोफेसर जमील, आईसी इंजन्स के। एंड देन माय डैड वाज आल्सो, ही वाज लाइक एन एक्सटर्नल सुपरवाइज़र, ही हेल्प्ड मी and it was a hands-on project to measure the characteristics of combustion, where we put in a probe on a gasket और इंजन को फायर करते थे और उसमें बाकायदा आग लगती थी और डेटा आता था उसको लॉग, जैसे आपने देखा है जो मैंने आपको वीडियोस दिखाई हैं। ये तो खैर दिस इज़ नेक्स्ट लेवल। तो वो एक कंटिन्यूड सपोर्ट थी, इनकरेजमेंट थी। और फिर and I think it was both ways, मेरा इंटरेस्ट भी था। So then I used to accompany him to जो ये प्रोजेक्ट्स करते थे या वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में जाके कोई कंसल्टेंसी करते थे, बिकॉज उनका भी ये होता था कि वो हर वक्त बियॉन्ड हिज गवर्नमेंट जॉब एंड एवरीथिंग ही वाज ऑलवेज डूइंग समथिंग। तो उसको फिर ये कि मैं भी साथ जाती थी, इंटरेस्ट लेती थी, with the intention of learning and also with the intention to help him out and to support him. Excellent. तो जब आपका यूके आपका एक्सपोजर हुआ और वहाँ पे आपने जाके देखा कि इतना ज़्यादा काम हो रहा है, एंड यू डिड योर मास्टर्स एंड देन यू अगेन वेंट देयर फॉर पीएचडी, यू नेवर थॉट ऑफ गेटिंग सेटल्ड ओवर देयर, बिकॉज वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और लोगों को, जो टैलेंटेड लोग हैं उनको रिटेन करने के लिए कोशिश करते हैं। बिल्कुल। उसमें यह था कि जैसे आपने अभी फोकस की बात की ना, तो वो जैसे मेरा एक उसी वक्त एक फोकस डेवलप हो गया था। हम कुछ इंजन्स पे उस पे कि हमने इंजन्स बनाने हैं, ये करना है लाइफ में। लाइक माय फादर हैड सम ड्रीम्स, आई हैड सम कि ये चीज़ें बनानी हैं, कंपनी खोलनी है। तो वो तो जाहिर है वो सारा कुछ पाकिस्तान से रिलेटेड था। और एक चीज़ जो अब मैं कहना भूल गई, लेकिन आई वुड जस्ट ऐड दैट हेयर, कि जैसे हमारी एक मेरा ये भी होता था कि जैसे जो छुट्टियां हैं या कुछ टाइम नहीं ज़ाया करना, यानी हर छुट्टियों में देयर वाज समथिंग प्लान्ड। लाइक ओ लेवल्स की छुट्टी है तो या कुकिंग का कोर्स करना है या स्टिचिंग का करना है या कंप्यूटर्स का करना है। इसी तरह ड्यूरिंग इवन इंजीनियरिंग के अब इतनी छुट्टियां, हमारे तो कम छुट्टियां होती थी, आपको याद है, लेकिन उसका भी कोई प्लान होता था कि इन 4 छुट्टियों में ये काम कर लेना, ये का। इट्स नॉट जैसे कई दफ़ा मैं बच्चों को देखती हूँ कि छुट्टियाँ हो गई हैं तो जस्ट सिटिंग देयर डूइंग नथिंग। इट वाज नेवर लाइक दैट। सो आई थिंक दैट आल्सो हेल्प मी। जो अभी भी मेरा, मैं आपको कही थी ना कि बाय द मिनट द शेड्यूल गोज कि आज ये करना है, वो करना, इस तरह। Did you get any offers there while you were there? Yes, there were opportunities to stay in the university, continue this, or to set up a company there. And but you were so planning to come back and set up I was planning, yeah, because for many reasons. One was obviously my family was here, and my husband was also here, and my parents, his parents, वो एक होता है फैमिली का वो था। फिर दूसरा ये था कि बिकॉज मैंने अपने वालिद साहब के साथ शुरू से हमारा था कि हम इकट्ठे काम करेंगे, तो मुझे था कि मैं वापस जाऊंगी, उनके साथ काम करूंगी। और फिर उन्होंने हमें हमेशा ये सोच दी थी कि आप वापस आओ, अपने मुल्क के लिए काम करो, पाकिस्तान के लिए कुछ करो, बिकॉज ही ऑल्सो ड्यूरिंग हिज इनिशियल लाइफ ही वॉज अब्रॉड, बट देन ही केम बैक बिकॉज ही वांटेड टू सर्व द कंट्री। सो वी हैड दिस, we were never really by our parents encouraged कि या हमें कोई बाहर को बड़ा ग्लैमराइज नहीं किया जाता था कि वो कोई बहुत जन्नत है जहाँ आपने ज़रूर जाना है। Excellent. No, I think वो चीज़ भी आपने जो बयान की है वो I can relate to it. And जो मरहूम मसूद साहब की आपने बताई हैं बातें, he was a true patriot. जी माशाल्लाह, उनको बरीक़ रहमत करे, उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन। अच्छा, अब हम चलते हैं ज़रा रियलिटी ऑफ थिंग्स की तरफ कि अभी जैसे अभी इस वक्त अपनी कंपनी के क्या हालात चल रहे हैं। सो टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट कि वेयर आर यू इन टर्म्स ऑफ योर एंटरप्रेन्योरियल जर्नी। आप कहाँ पे मौजूद हैं कि आपने कोई फंडिंग रेज़ की, उस फंडिंग के बाद अब क्या स्टेटस है इस पर आपका? इस तरह है कि जब हमने ये स्टार्ट की तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो मुझे ये था कि ये इन्वेंशन जो है, दिस इज़ अ पाकिस्तानी इन्वेंशन, सो दिस शुड कम आउट टू द वर्ल्ड फ्रॉम पाकिस्तान। I wanted to take this engine to the world from Pakistan and from a Pakistani company. तो हमने ये कंपनी इनिशियल तो स्टार्ट की।
अब उसमें हमें इनिशियल तो सीड मनी वगैरह मिल गया और विच वाज आई लाइक पिच्ड फॉर $1 million स्टार्टिंग बिकॉज दैट वाज द रियलिस्टिक अमाउंट कि जो कोर, बिकॉज इसमें एक आपकी इंजन की एक कोर टेक्नोलॉजी है जिसको डेवलप करना है एंड देन देयर इज़ आल्सो एन ऑक्सिलरी टेक्नोलॉजी कि उसको जहाज़ के साथ कैसे इंटीग्रेट करना है। फिर आपको पता है कि कोई भी एयरबोर्न चीज़ होती है एरोस्पेस में, इट्स रेगुलेटेड, इट्स सर्टिफाइड, आपको सर्टिफिकेशन करनी है, सब कुछ करना है। तो आई न्यू कि the whole thing will take around $10 million, but just to make the core technology and to prove it I would need $1 million. तो that's what I pitched for. But यहाँ पे जो एक women venture fund था उनके साथ हमें जो seed money मिला equity sharing पे, वो सिर्फ it was you know a fraction of that, maybe 15% of $1 million. So very little, but it was at least it helped us launch as a commercial enterprise. So we set up a Pakistani company. We had some infrastructure in place because my dad was always doing this through his life, and we built that infrastructure. We added more machinery, heavy machinery, equipment, specialized machinery to it. Know-how तो थी ही, experience तो था ही, और वो सारा काम में आ गया। आपको पता है कि labor is not a very big cost here, so we hired people. My dad trained them, he also trained me, और हमने काम शुरू कर लिया। हमने प्रोग्रेस भी बहुत किया, आउटपुट। फिर जब कोविड आया तो वो एक सेटबैक था। उसमें फिर वो जो जिस तरह हम चीज़ों को प्लान कर रहे थे कि ये इनिशियल फंडिंग वुड बी फॉर लाइक 2 years and then we would be able to raise more, and you know the trajectory that the world was going on, and then it was like a total roadblock or a U-turn or whatever you want to call it. So at that time obviously एक setback था, and then we asked this organization, कारंदाज ने हमें पहले फंडिंग दी थी, उनको हमने रिक्वेस्ट भी किया कि to, you know, they had a ticket size which was bigger, they could have easily given us something. And I see that बहुत जगह मुझे ये भी लगा कि फंडिंग रेज करते हुए कि बहुत it wasn't a very heavy amount that I was asking, and there is, even now there is progress. You can see that there is output. आपको नज़र आई? Indeed, yeah. आपको नज़र आता है ना? Work, I can see that. You can see the work, Yes, you can exactly, see progress, you can see output. So there is, अब जो जनरल हमारे मुल्क के VCs हैं, तो चूँकि आप कह रहे हैं खुल के, तो वो एक उनका बस एक विंडो शॉपिंग वाला एटीट्यूड था, और जनरली पीपल दे जस्ट वांट टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन, दे आर नॉट कंफर्टेबल विद द टेक्नोलॉजी, दे आर नॉट, मतलब बिकॉज हमारा पाकिस्तान में ये है कि वी वांट शॉर्ट टर्म गेन्स, वी आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट पेशेंटली। अभी जो हमारे मुल्क में ये हम इस हाल को पहुँचे हैं जो अब हमारे हालात हैं, वो इसीलिए कि हम किसी लॉन्ग टर्म प्लानिंग में भी बिलीव नहीं करते, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी नहीं बिलीव करते। VCs इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टार्टअप्स में, मोबाइल एप्लीकेशन, ये वो कि वो जी 1 साल में कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाएं और 2-3 साल में आपको 10x रेवेन्यू आ जाए। लेकिन जब आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर और डीप टेक टेक्नोलॉजी की बात करते हो, एरोस्पेस की, तो उसमें तो टाइमलाइंस लंबी होती हैं, एंड देन देयर इज़ ऑल्सो, यू आर बाउंड। अब I cannot, like people say, like a software company, they can pick up their laptop and they can get incubated in Y Combinator. I cannot lift this machinery on my head and go to a, you know, I need an infrastructure. I've trained these people, they're skilled people, there is a setup. So you cannot just move there. मतलब इसका एक और होता है, फिर इसमें टाइम, एक तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर में ये होता है कि बाहर के मुल्कों में ये होता है कि इस तरह के जो स्टार्टअप्स होते हैं, एक तो उनका फंड्स ही अलहदा होते हैं, दे आर रेडी टू, यू नो, दे गो फॉर मून शॉट्स एंड ऑल दैट थिंग, and they are ready to wait it out also and to gamble the money, but you know they get infrastructure support from government, because अगर आपकी एक मशीनरी जो है 10 million और 20 million 30 million, then आपकी एक स्टार्टअप की इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न और इतनी मशीनरी को
खुद से परचेज़ करे। तो आमतौर पे बाहर ही होता है कि वो आपको एक सपोर्ट मिलती है जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं। अब यहाँ पे ये मसला है कि जो हमारे गवर्नमेंट और डिफेंस के इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, दे आर वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट एंड फॉर डिफेंस एट 30% ऑफ देयर कैपेसिटी। दे हैव रूम टू एक्सपैंड दिस, मतलब 100% पे जहाँ 70% ज़्यादा काम कर सकते हैं, लेकिन हमारा कोई कल्चर नहीं है। अब हालात ऐसे हुए हैं कि उनको थोड़ा सा उनके ऊपर प्रेशर आया है कि वो कमर्शियल काम करें। वो इंटरेस्टेड ही नहीं होते, ना उनको पब्लिक डीलिंग आती है, ना उनको कमर्शियल पेस पे ऑपरेट करना आता है। हम तो लाइक यू नो दे वो टेक एक छोटी सी चीज़ प्रोसेस करने में वो 2 माह लगा देंगे। हमारी तो टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है इतनी देर, तो यू नो राउंड द क्लॉक वी मूव एट अ पेस. So these are the problems that are here, but it had its advantage because I had worked in the industry here before going for my masters and PhD. तो मुझे थोड़ा सा एक environment, manufacturing environment जो पाकिस्तान की है, जो industry है, उसका एक idea था, एक base थी, वो एक advantage था। लेकिन ये इस किस्म के जो challenges हैं वो हमें बहुत आया कि एक तो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट आपको उस तरह नहीं मिलती जिस तरह मिलना चाहिए थी। अब बाहर अगर आप देखें जो बड़े एयरलाइन इंडस्ट्री की अगर मैं एग्जांपल दूं एरोस्पेस में, क्योंकि ये उससे ताल्लुक़ है, तो एयरबस बोइंग उनकी एक कमर्शियल डोमेन है, एक उनकी डिफेंस डोमेन है। बट डिफेंस डोमेन इज जस्ट 30%, द रेस्ट 70% दे डू देयर कमर्शियल वर्क। और चाइना फॉलोज दिस मॉडल एज वेल कि वो कमर्शियल काम करते हैं, अपने आप को भी सस्टेन करते हैं और अपनी प्राइवेट इंडस्ट्री को सपोर्ट भी देते हैं। Indeed, yes. Because if there is like a very heavy infrastructure that I require to do R&D, and I don't have the finances nor the time to import it and set it up. But some government organization has it, but they are not, nobody is using it, they are not interested to use it, they are not interested to work for us even commercially if we pay them. So that's एक ये जो एक फॉल्ट लाइन है हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम में। दूसरा वही है जो मैं आपको बता रही हूँ कि हम इतने शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स पे हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी में कोई सॉल्यूशंस नहीं है, कोई R&D नहीं है। आप व्हेन यू इंपोर्ट टर्न की सॉल्यूशंस देन दे आर नॉट रियली सॉल्यूशंस। जिस दिन वो टेक्नोलॉजी ब्रेक डाउन करती है आप उसको यू आर लॉस्ट. Then you have to re-import, you have to call experts from abroad at a very heavy price to repair it, or spare parts from abroad, or or replay the whole process, or वो it's such a heavy penalty on our foreign exchange. अगर हमने अपनी एक capability develop की है, चाहे हम वो काम बाहर से कराएं, but we exactly know what it is. We can make it, we can repair it, we can do after sales. So that capability is here. Excellent. And this is just, I know about my field, but I see कि साइंस में हर किस्म के फील्ड में सब लोग यही कंप्लेन करते हैं। जैसे मेरी मदर कहती हैं कि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, केमिकल्स हैं, ये चीज़ें इतने आराम से यहाँ बन सकती हैं, कोई बनाता नहीं है, इंपोर्ट करते हैं। हम कहते हैं कि ये प्रोडक्ट, अब जेट इंजन को अगर आप ले लें तो एक तो लोग इंपोर्ट वैसे ही नहीं कर सकते, उसके ऊपर अपनी रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन अगर कर भी सकते हैं तो इट इज़ सो एक्सपेंसिव बिकॉज वैल्यू एडिशन की बात है ना। आप अगर किसी चीज़ में अपना जहन डालते हैं, R&D करते हैं, उसमें वैल्यू ऐड करते हैं, तो उसकी फिर प्राइस कहाँ से कहाँ चली जाती है। ये बातें हमने बड़ी दिल को लगने वाली भी की हैं और ये थोड़ी सी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है जी, बिकॉज यूर राइट कि यहाँ पे जो स्टार्टअप्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा ट्रेंड जो है ना वो जो बज़वर्ड्स हैं उनके राउंड है एंड क्विक बक्स के चक्कर में सारे, और मोस्टली ये लीन स्टार्टअप के मॉडल पे चल रहे हैं। दैट मीन्स कि कुछ छोटी सी MVP बनाएं एंड एनी सीड मनी दैट यू गेट जस्ट शो सम इनिशियल ट्रैक्शन। हाउएवर ये जो मून शॉट्स की आपने बात की ना, विच इज़ द मॉडल आई गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम, लाइक SpaceX ने जो किया जी, और इसमें आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग इंजेक्ट करनी पड़ती है एंड इट्स फॉर द होल कंट्री। हमारा ये चीज़ चल जाती है, इट्स गोइंग टू गिव अ मैसिव बेनिफिट टू आवर कंट्री। जो आपने बात की कि इंडिजिनस चीज़ें अगर हम बनाना शुरू कर दें तो बहुत सारे इतने जो मिलियंस ऑफ डॉलर का इक्विपमेंट है जो हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री का डिलेमा ये है कि हमारी बहुत ज़्यादा जो तवाज़न है वो बिगड़ा हुआ है इम्पोर्ट वर्सेस एक्सपोर्ट्स का। वो इसीलिए बिगड़ गया ना इवेंचुअली। तो अब ये चीज़ें देखें, अगर आप शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स पे चलते जाएंगे
So one day, you know, what has happened is the logical conclusion. Indeed. It's the logical outcome. It Indeed. had to happen this way कि अगर आप फोकस ही नहीं कर रहे और आप अपनी पॉलिसीज़ को भी जैसे अगर एक इंडस्ट्री की तरफ स्क्यू कर देते हैं टूवर्ड्स आईटी, तो वो भी ठीक नहीं है. सारी इंडस्ट्रीज़ को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए. I wrote with my dad. I wrote an article on this as well. Okay. I think it was published 2 years ago. Fault lines in the deep tech ecosystem of Pakistan, highlighting these problems that we faced with our startup. रोल मॉडल्स जो है ना, वो जैसे आपने बात की, यू आर लाइक ए रोल मॉडल. एंड जो मैंने एक चीज़ रिसेंटली आर्टिकल पढ़ा था इंडिया के बारे में कि इंडिया हैज़ साइंड द, जो टाटा है, टाटा की जो एयर इंडिया है, दे हैव साइंड द लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्ट विद बोइंग एंड एयरबस इन द हिस्ट्री ऑफ द एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री. एंड देयर डील वाज डन. उसमें उन्होंने जो एयरबस की जब डील कर रहे थे तो देयर वाज अ स्काइप कॉल और जूम कॉल, आई थिंक दे हैड. उसमें नरेंद्र मोदी वाज देयर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड टाटा वाज देयर, रतन टाटा. दूसरी साइड से एयरबस चूँकि फ्रेंच है, सो फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन वाज देयर, प्राइम मिनिस्टर है जो भी, प्राइम मिनिस्टर मैक्रोन वाज देयर, एंड एयरबस CEO was there. So they were inking this deal जिसमें जो आपने बात की ना कि Europeans are the vendors and India is placing the largest order of aircrafts. तो पाकिस्तान में ये चीज़ें अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रही. अब मुझे क्योंकि पाकिस्तान में हम देखें, एक चीज़ है, there are some things that are very black and white. We know that this is something good for Pakistan. Right. Then I mean there are organizations and there are funding bodies they do not support. Why? I mean किसी की even चले किसी की private investment है, वो करता नहीं करता. You know, you're sitting on money, you're sitting on government funds, you have to, but आप for I don't know what reason, just because आप technology से इतना घबरा जाते हैं या एविएशन से घबरा जाते हैं. Have you tried with ICT R&D fund, the Ignite? जी, I have. They have been very disappointing also because one they just opened the fund. I see. Okay, you know, anybody can apply. I applied there. You know, they keep making my application go around in circles. I see. उनको अभी वो कहते हैं this is not related to ICT. अगर वो ICT के नहीं है तो then you should set up an eligibility criteria. And then your application आपकी ऐसी नहीं है वैसी नहीं. तो मैं उनको कही थी कि मैं पूरी मतलब दुनिया में मैंने अपनी PhD कर ली, 2 थीसिस लिख लिए, पास करा लिए, पेपर्स पब्लिश कर लिए. मेरा एक पेटेंट ग्रांट हो गया जो कि मैंने खुद लिखा है. Patent attorneys patent लिखते हैं. I wrote that patent myself. Okay, nice. And it's been granted in the US. Excellent. And I'm not capable to write your application. So this is because they don't have the capacity to evaluate or to process it. And then they are stuck with IT. कि ये टेलीकॉम का फंड है और ये IT का फंड है, लेकिन फिर आप दूसरों का वक्त ना ज़ाया करें. आप फिर उसको कर दें कि सिर्फ IT बेस्ड स्टार्टअप्स कैन अप्लाई एंड यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई. और जो नाइका टेक बनाया रिसेंटली इज फोकस्ड ऑन आई थिंक एरोस्पेस, बट it's also set up by Ignite. So is there any hope from them? No. I see. I don't see at the moment. I don't see any hope. What is it that they are doing and what needs to be done? It was built on the old airport, right? So they were building it on hangars. अगर आप मैं जब बोइंग में इस दफ़ा विज़िट किया तो वो पहले आपको जहाज़ नहीं दिखाते, वो कहते हैं आप हमारी बिल्डिंग देखें कि इट्स a big structure which without any support that can accommodate a big huge aeroplane. ठीक है, वो जहाज़ एक तरफ से रॉ मटीरियल आता है, बनना शुरू होता है और पूरे विंग्स लग के पूरा का पूरा जहाज़ बाहर निकल जाता है. They said it can house 2 Disneylands. It's huge and it's a marvel of engineering. So this is how, जब आप डीप टेक की बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की, infrastructures are required. Now here what they did, they got the old airport. They had huge hangars. ठीक है, we suggested, my father made them a plan for setting up a propulsion or a jet engine manufacturing facility or an aircraft manufacturing facility. They converted, instead कि आप उस structure को use करो, ठीक है, और उसको इस्तेमाल करके एक फैक्ट्री लगाओ, ओवरहेड क्रेन्स लगाओ, प्लेन्स अंदर आ रहे हैं जा रहे हैं. They converted it into paper offices. उसके अंदर आपने दीवारें बनाने शुरू कर दिए और दफातर. And they have a real estate model. They want to rent out that premises
and make money. Okay. One, the budget, obviously जब allocation होती है, अगर आप नाइकैट कर रहे हैं और एंटरप्रेन्योरशिप और इसके नाम पे बात कर रहे हैं, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको किराए पे दफातर बना के पैसे बनाना शुरू कर दें. It is meant for. So first you ruined those hangars, जिसके साथ एक एयरपोर्ट भी आपके पास था, एक फैसिलिटी भी थी, आप प्रोडक्शन करते वहाँ पे, वहाँ टेस्ट करते, रन करते, वो आपने ज़ाया कर दी. फिर उसके बाद आप इस तरह के मॉडल पे हैं, आपके पास एरोस्पेस के कोई एक्सपर्ट सिविल डोमेन में आपके पास कोई नहीं है. इट्स जस्ट एयर फोर्स and which is only one domain. As I said, that defense is 30%, Right. civil is 70%, that 70% is missing. Okay. They have no vision, no clue. I see. Again, most of the startups are kind of IT based, avionics and IT, but not into product development and deep tech. Okay. And then उसकी एक capacity भी नहीं set up की, उसकी कोई vision भी नहीं है. तो इट्स वेरी सैड. बट बात यह है कि आपने जो पैसा लिया है हुकूमत से या डिफेंस से, वो किसी और चीज़ के कह के लिया है, लेकिन जो आपने कहा है वो आप कर नहीं रहे. एंड दे आर नॉट विलिंग टू spend on HR, human resource. They are not willing to invest on aerospace expert. जब आप वहाँ जाएं और बिल्डिंग भी देखें तो they are like huge structures because वो पहले हैंगर था जैसे कोई, और वो इतना बड़ा स्ट्रक्चर, उसमें आपने कंप्यूटर्स रख के ऑफिस बनाया हुआ है ना, आप उसको ठंडा ठीक से कर सकते हैं ना गर्म, और इट्स क्लॉस्ट्रोफोबिक बिकॉज इट्स नॉट मेंट फॉर दैट. इट्स मेंट टू मेक अ फैक्ट्री or a hangar or an aircraft manufacturing facility or a engine manufacturing facility. These are very deep-rooted problems, and it's very sad because it's all government's money and it's not been put to the use that it should be and the use that they claim और जिसके basis पे वो लिया गया है, वो तो कुछ भी नहीं हो रहा. I understand. I think priorities need to be redefined, and the money needs to be put to the right use. I think the message that I get from your conversation is of hope, in the sense that you are focusing on what is your passion and your purpose, and you just need support from the stakeholders like the government as well as the investors, and they need to think beyond just 2 to 3 years and see कि यार ये जो ग्राउंड ब्रेकिंग या कोई इस तरह की चीज़ इन्वेंशन की जा रही है जिस पे आप देखते हैं कि यूएस में टेस्लास बन रही हैं, स्पेसएक्स बन रही हैं, गूगल बन रही हैं, जो डीप टेक है. इट टेक्स टाइम, इट टेक्स 5 to 10 years. It takes time, but you see, अब आप टेस्ला की बात करते हैं तो टेस्ला is, it's like SpaceX is a phenomena. Yes. Like that guy, he commercialized space. Yes, indeed. Yeah. It's a revolution. Like इससे पहले क्या होता था, स्पेस की बात है तो या नासा काम कर रहा है या रशिया की गवर्नमेंट कर रही है या चाइना, मतलब इट्स नॉट समथिंग कि एवरीडे पर्सन कैन थिंक अबाउट. So that's a breakthrough in itself, but he achieved it. इसी तरह अब हमारे मुल्क में अगर एरोस्पेस की बात होती है तो या तो कुछ एयरलाइंस हैं वो ट्रांसपोर्ट कर रही हैं मुसाफिर, या डिफेंस में कोई काम हो रहा है, सिविल स्पेस में बात करना, और इंजन्स की बात करना. इंजन्स में अगर आप देखें तो हमारे पास अभी मोटर बाइक का इंजन भी पाकिस्तान इस तरह नहीं बना रहा, चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, या कुछ कॉटेज इंडस्ट्री में छोटा मोटा बन रहा है, बट देयर इज़ नो, वी आर नॉट मेकिंग इट. सो इन दुनिया के बहुत से कम ममालिक हैं जो इंजन्स बनाते हैं, एंड like it's a breakthrough in itself that we made a jet engine in a commercial setup, and in a very small commercial setup. And then I think that we should look at it. हमें जो करने की ज़रूरत है ना वो ये है कि मैं ये मैसेज देती हूँ कि if you think that something is good for Pakistan, it doesn't matter who is doing it. Somebody is doing something good for Pakistan, you should support it for your own sake. You are living in this country. आप अगर सपोर्ट देंगे तो वो किसी बेहतरी की तरफ आपका मुल्क जाए, अगर आप नहीं देंगे तो वो जो बंदा कोई काम कर रहा है, अगर मुझसे आज मुझे पाकिस्तानी गवर्नमेंट नहीं सपोर्ट देगी या
Pakistan VCs या Pakistan ही support देगा तो somebody will, and I've had those kind of offers like from US, you know, when they say okay, you set up a company there, you become you know a part of us, or you join us, or you become like a company in that country. लेकिन ये बस मेरा एक पता नहीं क्या एक How long do you think you will test the waters, and if it doesn't work out, you will call it a day and you will move out? Do you have such plans, or you think you're just gonna stay the ground? ये तो अल्लाह को पता है. I don't know what my threshold is. At the end of the day, it's a matter of survival. Okay. अभी तक if I'm surviving, we are surviving. Have you talked to all the VCs? You have Sarmaka, you have Indus Ventures, you have Gobi Ventures, then you have got Fatima Group. Yeah. You've got these guys, Shahriar Hadri with Deosai Ventures, and Khurram Zafar. So how they many all of them know you've- me. all They right, all know okay, me. Right. Okay. So you've gone through all of them. All I've right, gone okay. through all of them. Nice, makes sense. Okay, so I think Dr. Sarah, thank you very much for your time. With this, I think I would like to conclude today's discussion. Thank और you. मैं अपने व्यूअर्स को ये पैगाम देना चाहूँगा कि ये जो हमने वी हैव मेट समबडी हु इज़ डूइंग अमेजिंग स्टफ लिविंग इन पाकिस्तान, और उसके साथ साथ जो इन्होंने डोमेन चूज़ किया है दैट इज़ वेरी वेरी डीप टेक, और मैंने जो इनकी देखी है वर्कशॉप, जो इनका सेटअप देखा है, दैट इज़ अमेजिंग. दे आर डूइंग सम सीरियस स्टफ. Bunch of VCs need to think if something like that can be done in Pakistan. I believe this can give some really good return in the long run. Reach out to Dr. Sarah, and let's see what happens as a result of that. And this is the only company in the world developing this technology commercially. Excellent. That's great. The hardware for this technology. There's one or two companies, or one company which is Brilliant. doing software, but that's not a very complete solution. Ours is a complete solution. But I've also seen many examples in the world where an inferior technology sees commercial success because of the timing. Right. So if they, you know, in other parts of the world, people are doing this, they have an inferior technology, but they have the right resource, so they might just take over. Right. So it's Brilliant. something that we need to think about. Indeed, definitely. Very thought-provoking discussion. Thank you very much, Dr. Sarah, for your time, and have a safe welcome. journey to Lahore. Thank you for inviting me. You're most welcome. So if you like the episode, please do subscribe, because we'll bring even more interesting episodes on our channel going forward. Thank you very much.